Assalamu alaikum. So today we will discuss question number 13 of class metric mathematics. In this question we need to prove left hand side, which is a multiplied by b plus c. So first we need to solve bracket. So starting from the bracket left hand side. So first we are solving b plus c. It means we need to add matrix b with matrix c. So सबसे important चीज़ ये है कि their orders must be same for addition. So हम clearly देख सकते हैं their orders are same. So 2 minus 1 0 3 1 and 2 easily be added by 1 1 2 minus 2 2 3. जब addition करेंगे तो first value add हो जाएगी first से, this value will be added by this value on same order से बाकी सारी values भी add हो जाएंगी. So 2 plus 1 is 3. Then minus 1 plus 1 होगा, so 0. Zero. 0 plus 2 is 2. 3 minus 2 is 1. 1 plus 2 is 3. And last one, 2 plus 3 is 5. So this is the solution of b plus c. Then we need to multiply a by b plus c. So a multiplied by b plus c. In multiplication हमें क्या order देखना है? Matrices लिख के समझाता हूँ तो it will be easy for you. 3 1 minus 1 and 2 multiplied by b plus c. So b plus is 3 0 2 1 3 and 5. So हमें देखना क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में. सो जस्ट ये देखिएगा, रॉज देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रॉ. फर्स्ट मैट्रिक्स के रॉ में कितने एलिमेंट्स हैं? 2. यहाँ लिख लेते हैं ये 2 है. एंड कॉलम इन मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स कॉलम के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं सेकंड मैट्रिक्स में, वो देखना है. सो देयर आर 2 कॉलम्स एलिमेंट्स इन कॉलम एंड 2 एलिमेंट्स इन रॉ. सो दैट्स वाई इनका हम मैट्रिसेस पॉसिबल है. इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 3. सो आप देख सकते हैं इसके कॉलम एंड रॉज इक्वल है, दैट्स वाई इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. ठीक है. सो स्टार्टिंग नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन, लास्ट टाइम जहाँ लेफ्ट किया था वैसे ही मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे. तो सो मल्टीप्लिकेशन में कैसे होगी, जैसे मैंने मेंशन किया येलो मार्क से, फर्स्ट रॉ के फर्स्ट नंबर को सेकंड रॉ मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के फर्स्ट से कर देंगे. जो मैंने मेथड बताया हम वही फॉलो करेंगे. इफ यू रिमेंबर, फर्स्ट मैट्रिक्स 3, देन ब्रैकेट, स्पेस छोड़ेंगे एम्प्टी, देन लास्ट वैल्यूज प्लस 1, अगेन एम्प्टी स्पेस. सेम प्रोसेस फॉलो होगा 3 टाइम्स, बिकॉज हमें 3 कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. 3 ब्रैकेट प्लस 1, देन अगेन 3 ब्रैकेट प्लस 1. इस तरह हम अपने फर्स्ट रॉ को कंप्लीट कर चुके हैं. देन इस सेम मेथड से हम सेकंड भी लिख देंगे. सो सेकंड वन इज सेकंड रॉ के लिए हम तो डिफरेंट कलर यूज कर ले सो इजीली आइडेंटिफाई कर सके. सो सेकंड रॉ इज माइनस 1 एंड 2. तो सेम मेथड से हम रॉज में माइनस 1 ब्रैकेट प्लस 2, माइनस 1 ब्रैकेट प्लस 2 एंड माइनस 1 ब्रैकेट प्लस 2 इस तरह मेंशन कर देंगे. नाउ अब हमें क्या करना है, हमें मैट्रिसेस के नंबर्स लिखना है कि जो एम्प्टी स्पेसेस है उसमें क्या आएगा. सो एम्प्टी स्पेसेस में इसको अगर हटा दें, सो फर्स्ट एम्प्टी स्पेसेस में आ जाएगा हमारे पास ये, ठीक है, 3 and 1. सो हम पहले ये मेंशन करना है 3 and 1 आ जाएगा कॉलम में. तो 3 1 3 and 1. सो हमें जो वैल्यूज पुट आउट करनी है वो कॉलम्स के अंदर पुट आउट करनी है.
सेकेंड में आपके पास क्या वैल्यू है? सेकेंड कॉलम की वैल्यूज है 0 and 3. So we need to put the values in column 0 and 3. 0, 3. And the last column is 2 and 5. So we just need to put the values in column again 2 and 5. So same कलर से आपको आइडिया हो रहा होगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ लिखी. So moving forward, 3 multiplied by 3 is 9. हम कर क्या रहे हैं? A multiplied by B plus C. Left hand side of question number 13 part 1. A multiplied by B plus C. 3 multiplied by 3 is 9. 1 multiplied by 1 is 1. 3 multiplied by 0 is 0. And 1 multiplied by 3 is 3. 3 multiplied by 2 is 6. 5 multiplied by 1 is 5. And in the second column, minus 1 multiplied by 3 is minus 3. 2 multiplied by 1 is 2. Minus 1 multiplied by 0 is 0. And 2 multiplied by 3 is 6. The last number is minus 1 multiplied by 2 is minus 2. And 2 multiplied by 5 is 10. Then we will just add and subtract these numbers, so answer will be 10, 3, 11, minus 1, 6 and minus 2. So I guess आप लोगों को ये लेफ्ट हैंड साइड समझ आ गई होगी. Sir, answers are consistent. 1 second. So this is the left hand side. अगर आपको screenshot लेना है, so you can take a screenshot, or if you want to. Sir, जी. -2 plus 10 होगा. आपने Okay, -2 sorry, plus sorry. Minus 2 plus 10, so it will be minus plus 8. Thank you, beta. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 2 इज, आई गेस पार्ट 2 में मिस्टेक है. ठीक है, सो उसको स्किप कर दिएगा. पार्ट 2 वैसे स्किप हो जाता 13 का. सो नाउ मूविंग टू द राइट हैंड साइड ऑफ द सेम क्वेश्चन. मैं यहीं पे कर लेता हूँ. राइट हैंड साइड सामने आ जाएगी इसके, तो जैसे आपने कहा डायरेक्ट, सो उस तरह से भी देख लेते हैं. नो इशू. राइट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 1. राइट हैंड साइड में हमारे पास है a मल्टीप्लाई बाय b. So first we need to multiply a by b. So matrix A is 3, 1, minus 1 and 2. And matrix B is 2, minus 1, 0, 3, 1 and 2. Now again multiplication the same process रहता है, but अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो 3 multiplied by 2 is 6, 1 multiplied by 3 is 3. Then 3 multiplied by minus 1, minus 3, 1 multiplied by 1 is 1. 1 multiplied by 0 is 0 and 2 multiplied by 2 is 4. Moving to the second column, minus 1 multiplied by 2 is minus 2, 2 multiplied by 3 is 6, minus 1 multiplied by minus 1 is plus 1 and 2 multiplied by 1 is 2. And the last is minus 1 multiplied by 0 is 0, 2 multiplied by 2 is 4. So answer of A multiplied by B is 9, minus 2, 4, 4, 3 and 4. Then moving to the other part, which is A multiplied by C. So now A matrix A is same, 3 minus 1, 1 minus 1 and 2, and the matrix C is 3, 0, 2 और 1, 3 and 5. So उसको सेम मेथड से मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्टली जैसा आपने कहा. सो कोई इशू नहीं है फर्स्ट टाइम समझाने के लिए. इट विल बी बेटर, बट अगर आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाए तो इट विल बी इजी कि डायरेक्टली कर लें. जैसे मैं कह रहा हूँ 3 multiplied by 3 is 9, 1 multiplied by 1 is 1, then again 3 multiplied by 0 is 0, and 1 multiplied by 3 is 3, 3 multiplied by 2 is 6, and 5 multiplied by 1 is 5. एक सेकेंड, यहाँ एक मिस्टेक है. 2 होगा.
मैंने अगेन सी की जगह मैट्रिक्स बी का कॉपी कर दिया, सॉरी. सो मैट्रिक्स सी इज 1 1 2 -2 2 and 3. Multiplication again start करें. 3 multiply 1 is 3. 1 multiplied by -2 is -2. 3 multiplied by 1 is 3. 2 multiplied by 1 is 2. 3 multiplied by 2 is 6. And 3 multiplied by 1 is 3. Then second column, -1 multiplied by 1 is -1. 2 multiplied by -2 is -4. 1 -1 multiplied by 1 is -1. And 2 multiplied by 2 is again 4. Then -1 multiplied by 2 is -2. And 2 multiplied by 3 is 6. After solving these conditions, so answer will be 3 minus 2 is 1, 5, 9, -5, 3, and 4. Uh, Now we need to add matrix AB plus AC. So आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल 9 को 1 से प्लस कर लें तो इट विल बी 10. देन -2 5 से प्लस कर लें तो 5 -2 is 3. एंड 2 को 9 से प्लस कर लें तो इट विल बी 11. 4 को -5 से करें तो -1. एंड 3 को 3 से करें तो 6. 4 plus 4 is 8. So you can see this answer of this question and this question are same. So we can say hence proved left hand side is equals to right hand side. ये प्रूव हो गया. ठीक है. सो अब इस पार्ट तरह. वन. जी पार्ट 2 तो आपको वैसे ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया. देन पार्ट 2 आपका स्किप होगा क्योंकि बिकॉज पार्ट 2 इज कम्प्लीटली रॉन्ग. उसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी. बी प्लस सी तो हो जाएगा. देन बी प्लस सी की मल्टीप्लिकेशन ए से नहीं हो पाएगी. सो इट मीन्स देयर इज अ मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन. सो इस वजह से ये हो नहीं पाएगा. ठीक है. सर यस. यस बेटा. सर आपने अभी तक कौन से क्वेश्चंस करवाए?